highly thankful to all of you who have come from abroad and from different parts of the world and different parts of the Pakistan. Nowadays, schedule of PIA is very hard. You don't know whether the flight cancels or not. Some people have come through the coaches, some people have come through the train, and some have come by the car. I'm highly thankful to all of you. I am highly overwhelmed to see so many people here. So now I'm scared that where I'm going to manage for the dinner I have arranged for 600 people and I find here 1,000 people. So I might become nervous here while talking. बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों को यहाँ देख के, क्योंकि मुझे बात करनी थी चैलेंजेस पे. मुझसे पहले जो स्पीच करनी थी वो ब्रिगेडियर मोहम्मद राणा साहब को करनी थी. अगर मुझे मौका मिला है तो मैं बात करूँगा कुछ चैलेंजेस पे, जो हमारी थीम है, चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ इन रूरल एरियाज़, चैलेंजेस इन अपॉर्चुनिटीज़. हालांकि मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे स्पीच पॉजिटिविटी से स्टार्ट करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं. हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम वो काम करेंगे कि सोसाइटी के लिए वो प्रोडक्टिव होगा, जो होता नहीं है. ज़्यादातर होना चाहिए. जो हम बातें करते हैं वो आपको करनी चाहिए, जो हम करते हैं वो करने जैसी नहीं होती. तो चैलेंजेस जो हमें आती हैं यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, अब चैलेंजेस की बात करेंगे तो वो नेगेटिव ही हो जाएंगी. चैलेंजेस ये आती हैं कि जब हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं, हमें कोई काम करना है, हमें मुश्किलात आती हैं बहुत बड़ी. सर होप कमिश्नर साहब या डीसी साहब माइंड नहीं करेंगे, कोई भी अगर यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन साइड से होगा, मुश्किलात ऐसी आती हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हमें चीफ गेस्ट नहीं मिलता. हम हाईली थैंकफुल हैं प्रोफेसर गुलशन अली मेमन साहब के, जिन्होंने हमें जो टाइम दिया उस टाइम पे आए. उन्होंने हमें CME क्रेडिट अवर्स दिए 10, जो कि पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में किसी को नहीं मिले. हमने सर को कन्विंस किया कि ये एकेडमिक एक्टिविटी है तो हमें CME अवर्स चाहिए, तो सर ने पूरा एनालाइज करके वो हमें दे दिए. उसके बाद जो चैलेंजेस हमें आती हैं, हमें कोई ओन नहीं करता यहाँ पर. वो कहते हैं कि हम पैसे बनाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं. हालांकि हमारा 1 साल लग गया इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने में. मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए, मेरे पर्सनल हालात बहुत ख़राब हो गए. मुझे कंपनियों ने अभी पैसे दिए नहीं है तो मुझे और टेंशन हो रही है, जिससे मैंने इंटरेस्ट पे लिए हैं. चैलेंजेस बहुत सारी हैं. हमारी अपनी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक माई प्रिंसिपल MS, दे माइट बी हेयर, they were not allowing our students to join the conference. I had to beg them, even couple of minutes ago, to allow them from the hospital, but I was asked to write an affidavit that I take the responsibility if something wrong happens. So is this my responsibility or the responsibility of Deputy Commissioner or Commissioner of the city to take the responsibility of all those people who are walking on the roads? Or it is the responsibility of a DIG or IG or the SSP of the city that they provide the security? These are the challenges that we are facing in our society. What we find? A scapegoat. We look for the scapegoat. We search for that. We try to blackmail, we try to emotionally torture that person who is doing all these things. So I'm very much disappointed to say like this. I know many other people would not be happy with my speech because I have not made any speech. I am here, the things I faced in a couple of minutes ago, I am telling all those things. We are being threatened, we are getting calls. They pay us the money, otherwise you would be killed. They are thinking this arrangement is done by me. It's not done by me, it's done by the pharma companies. I don't have much amount to spend on our friends because it's really hard to spend on the family in this condition. I am saying on this forum, so at least some of us will open up the eyes, they will look around, they will search around. It's a really open forum to talk like this. I know it itself is a threatening, but we need to be vigilant. You know, the mental health issues are increasing day by day. It's not because there's only high inflation. It's because we have no patience. We have no tolerance. We hardly appreciate others. We know the negative words a lot. If we ask you to appreciate each other, we would say, thank you so much. We are highly thankful to you. If we ask you to abuse somebody,
we are having 100 words because we haven't learned to appreciate. I'm not going to take much time. I'm highly thankful to all of you who have come here. Thank you so much.